Uh, Good evening to all. We have with us Nisha ma'am today. Nisha ma'am has secured AIR 51 in 2021, and she's presently serving as an IS, not serving, but training as an IS officer, Bihar. And ma'am, today we'll be talking about PSIR as an optional in terms of UPSC, as well as can also be taken in many of the state services exam. So over to you, ma'am. Right. Good evening, everyone. So my name is Nisha, as introduced by UD. So today, this session is for political science optional people. So the main discussion would include the discussion of the syllabus, the part of PSIR, how to start the preparation. Of those who are already given some attempts, they know what is the content. And just a second. And what are the different components of the syllabus, how to start the preparation, how to write answers, all your questions, and why political science, and would it help GS1 or 2 in any GS2 in somewhat in some manner or not, and is coaching required, or how the mock test to be given. These are some of the questions that we'll discuss. So the session would include basically the syllabus, then we will take your questions, why political science and all these questions, and then we can move on to the question paper. See, those who have already studied some part, I don't know, the majority includes those who have already covered the syllabus or have just started the preparation, yeah, they've already given some attempts. So uske basis pe we will have all your queries be solved, and whatever question you have, we will answer all of them. And then in the question, when we'll discuss the paper, we'll also see that how to approach a question, how to deconstruct a question, and then how to structure it. Is there a pattern to be seen? Is there some pattern in the previous year paper as well? Because just like we have discussed in GS, the whole of the paper will come from the syllabus only. It's complete, it's almost a reflection of the syllabus and then the previous year papers. So these are some of the part that we'll be discussing today. So can we begin? Yes, ma'am. Please, ma'am. Okay. So to just begin with my journey, till 12th, I had known medical, maths, PCM, which we call it. And then after 12th, I decided either to go for judiciary or either to go for UPSC. I also applied for judiciary, but then I got into Miranda House College, and there I took two subjects, which is political science and history. So these were my two subjects. And then both the subjects helped me in UPSC preparation, although it was not कि मैंने फर्स्ट ईयर से ही ऐसे यूपीएससी की कोर प्रिपरेशन नहीं शुरू करी थी. Only in the third year I started taking more interest in the syllabus, previous year papers, and so on and so forth. And then after 3 years of graduation, then I took, because I was not eligible that year, so I prepared it from home. I did not take any coaching for political science optional. My college background helped me a lot. My college professors were really, really good. So they helped me to understand the concepts, which will see how the core concepts of political science are to be understood. Because without understanding the core concept, आप जब तक समझेंगे नहीं कि political science है क्या, या इसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या इस subject में approach चाहिए, उसके बिना you won't be able to understand. I didn't take any coaching, and then so I discussed my strategy earlier also. अगर मैं सिर्फ ऑप्शनल की बात करूं, तो गाइस जैसे हम एक साल अगर इस एग्जाम को देते हैं, तो मैंने 6 मंथ में अपना सिलेबस कवर किया था, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसकी रिविजन और मॉक टेस्ट किए थे. दिस वाज द बिगर पिक्चर इफ आई से. And first 6 months included 2 plus 2 plus 2, and the first 2 months I started with optional. That is something जो कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से शुरू कर लो, कई कहते हैं ऑप्शनल से शुरू कर लो, but that was my decision
कि मेरी चॉइस थी कि मैं एक बार ऑप्शनल को करके साइड कर देती हूँ, बट एज आई से कि हर किसी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने पॉल साइंस लिया था तो आप भी अपनी जो मतलब प्रिपरेशन है आप ऑप्शनल से ही शुरू करो, नो स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल। सो दैट वाज वन थिंग। सो 2 months for preparation optional, then NCRT did and then the core books I did। उसके बाद मैंने बीच बीच में जैसे एक महीने में मतलब एक हफ्ते के 2 दिन मैंने ऑप्शनल का सिलेबस उठा के देख लिया। अभी उस 2 महीने में व्हाट आई डिड, मैंने जितने भी अपने कॉलेज में जो बुक्स पढ़ी, सिलेबस को पहले डिकोडिफाई किया। इज देयर अ साउंड इशू यूडी? नहीं मैम, कुछ बच्चे जो नए ज्वाइन करते हैं ना, कभी कभी वो माइक ऑन करना भूल जाते हैं अपना, तो उनको सुनाई नहीं ओके, देता, उनके लिए था वो मैसेज। तो आई वाज सेइंग कि जो पहले 2 महीने थे उसमें मैंने अपने जितने भी नोट्स कंपाइलेशन है, देखो हमने GS 1 2 3 4 में बोला था कि नोट्स किस तरह कंपाइल करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर उठाया और लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो लेकिन ऑप्शनल में नोट्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप बार 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 आप उस सब्जेक्ट के पास आएंगे, रिवाइज करेंगे एंड देन यू विल गो टू GS। मतलब ऑप्शनल को आपको डेडिकेटेड, बिकॉज इट्स 500 मार्क्स पेपर, 250 + 250, तो इट डिमांड्स योर अटेंशन, इट डिमांड्स योर extra preparation also because it requires a certain academic as well as some professional background in the subject। even if you haven't done graduation, that also मतलब there is no rule कि वो only those who get good marks who have background in political science। as I said कि before 12th I didn't know anything about, मतलब 11 12 का जो कोर होता है जब पॉलिटिकल साइंस को और डेप्थ में पढ़ते हैं, तो वो हमने ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ना शुरू करा था, मतलब 12th के बाद कॉलेज के साथ साथ। ठीक है, तो जो 2 महीने थे गाइस उसमें हमने मतलब मैंने अपने सारे नोट्स कंपाइल किए सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप देखेंगे टोटल टोटल जो सिलेबस जो है मैंने 40 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा था, और वैसे भी वो 40 पॉइंट्स में ही है। तो उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज कि एक सेक्शन इसके नोट्स ऐसे इस नोटबुक में बनेंगे, सेक्शन बी के ऐसे बनेंगे, सेक्शन सी के ऐसे बनेंगे, इस तरह से नोट्स कंपाइल करते गए, मतलब अलग अलग बुक से पढ़ के। अभी वो बुक्स और सब्जेक्ट मैटर हम देखते हैं कैसे बनता है। एंड देन IGP का सेक्शन, क्योंकि देखो हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होने वाली, मैंने पहले बोला है। तो थोड़ा मेरा कॉलेज का बैकग्राउंड हेल्प किया कि IGP के लिए कौन सी बुक्स हैं, या प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स थे उनकी बुक लिस्ट देखी। ठीक है, और इसमें जस्ट वी आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ इकरा टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी। बट एज आई सेड कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, बट आई रेफर्ड अ लॉट ऑफ आंसर शीट्स, तो जिसमें इनके भी दे हैव जस्ट स्टार्टेड इट। तो मतलब GS 2 और पॉलिटिकल साइंस में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ओवरलैप है। और कोचिंग के अलावा आई वुड से कि अभी जैसे जो आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा आप उससे कहीं ना कहीं लोगे, तो मार्केट में उस टाइम जो अवेलेबल था अच्छा मटेरियल मैंने वो भी कलेक्ट किया था जगह जगह से। जैसे शुभ्रा मैम के नोट्स बहुत अच्छे थे उस समय, और अभी भी अच्छे ही हैं, तो उनके नोट्स मैंने एक्सक्लूसिवली रेफर करे थे, क्योंकि थियोरिटिकल पार्ट तो उन्होंने से कैटेगरी कर रखी है GS 1 2 मतलब सॉरी सेक्शन वाइज। तो उनके सिर्फ नोट्स, आई डिडंट टेक एनी कोचिंग। एंड तो इस तरह से सेक्शन को बांट बांट के डिवाइड कर करके आई प्रिपेयर्ड इट। और टॉपर्स की कॉपी जहां से मिलती थी एक बार देख लेते थे कि थिंकर को कैसे ऐड करना है। तो देर इज अ स्ट्रक्चर टू प्रिपेयर दिस पेपर इन द सेंस दैट यू हैव टू हैव सम स्कॉलरली व्यूज। क्योंकि देखिए जब एक्सपर्ट हम सब्जेक्ट करते हैं, GS 1 2 3 आर जनरल स्टडीज, but this is optional which requires your extra input in the sense कि you have to know कि कौन से स्कॉलर ने क्या बात कही है और उसको कैसे सब्सटैंशिएट करें विद एग्जाम्पल्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरलिंकेज। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि थ्योरी के पेपर में सिर्फ थ्योरी लिखो और करंट अफेयर्स या कंटेम्परेरी टॉपिक में सिर्फ कंटेम्परेरी बातें लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से द फर्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें मार्क्स की, या हम किसी भी थिंकर का क्वेश्चन आता है, तो मान लो मार्क्स की बात आ गई, तो यू विल एक्सप्लेन द कोर थ्योरी, यू विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट, वेदर इट इज एलिनेशन, वेदर इट इज परमानेंट रिवोल्यूशन, मतलब रिलेटेड टू मार्क्स ओनली,